in people's head there exists that kind of difference. So I just want to make it clear that even from a private medical college, it's fine. You can be wherever you want to be. Great. किसी भी rank पे, it doesn't matter from where you have done your UG. Hello, I'm Dr. Mitakshara Chawla. I am from JSS Medical College, Mysore, a private one, and I have secured a rank of 55, tentative rank, and my marks score is 680. And this is my journey. Okay. No, good to see you smiling, dog. Good, very nice. You specifically introduced yourself as saying a private medical college, so I don't think so that really makes a difference, or does it? It's just a bias in our mind. Yes, sir. So it doesn't makes a difference, but in people's head there exists that kind of difference. So I just want to make it clear that even from a private medical college, it's fine. You can be wherever you want to be. Great. किसी भी rank पे, it doesn't matter from where you have done your UG. It's a very strong message that you have given. So let's start with the routine question. मतलब exam आपको कैसा लगा? How did you rate the exam? Easy, moderate, difficult? थोड़ा elaborate form में बताइएगा. So the main exam was a little on the moderate side, according to me. Okay. I felt that they had asked more common topics in a tricky kind of a way. Means there was no such topic which we haven't heard. Yeah, if you're preparing for the whole year, you have prepared, done properly your MBBS. ऐसा कुछ नहीं है which you have never heard. तो उस तरह के basis पे I would say it was moderate. You just have to put your mind more, rule out options more, reasoning वाले चीजें. Otherwise, it was a standard paper and like certain direct questions were there. Okay. So certain clinical were there. Exclusion skills मतलब थोड़े ज़्यादा deploy करने पड़े rather than facts. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो फिर आपने total कितने question attempt किए? Sir, I attempted all 200 questions. I had thought that I'll be a little defensive because I don't have that much good guesswork. So I wanted to be defensive, but by the time I finished my paper, I felt like, yeah, मैंने तो सब mark कर दिया. So I didn't really leave any question as such. Means I had thought कि if there is some certain topic or certain term which I didn't know, I would certainly leave that. But ऐसा कुछ था नहीं. I didn't come across any such thing. तो rule out करके कुछ option मेरे को ठीक लग रहा था. That's why I marked it and I performed all 200 questions. Okay. So ये जैसे the 200 questions that you marked, were they like in a continuation or were they like, you marked few for review and then subsequently like in the second go, you attempted the ones that were marked for review? So, like when I have practiced my mock test and the championship test and all this time since last year, I tried different strategies where I tried by doing all at once, kaise ho raha hai, my efficiency in that and the other way. So ultimately, I came to a conclusion that I did all the questions which I knew very well and I was sure of the answers. That so in one go, I would say, if I remember, it was around 106 questions जो मैंने first one go में mark कर दिए थे. 45 around were in review and rest 45 something were I didn't mark at all. And while giving the exam, I practiced in a way 30 minutes में I used to solve 50 questions because last year it was 300 questions. So तब से वैसा ही चला आ रहा था. That's why abhi what I did was 30 minutes में 50 questions. Obviously certain I was leaving. जो मुझे पता है that I'll make a silly mistake in that. Yeah, I need to think more on that. I did not solve it in one go because जब starting में कर रहे हैं ना तो थोड़ा डर भी लगता है. बचा हुआ paper भी है हमारे पास. तो one go में ना easy वाला first I did all. Later on, after coming back, I am little calm और तब I can think more. मैं ज़्यादा दिमाग लगा सकती हूँ उस टाइम पे. That's why in the second round और almost जैसे होता है ना कि जो confidently कर लिए हैं वो तो हो गए. तो अब जो 40 questions उसे ही देखना है.
And I had, like, if in the second round I had around 80 to 90 minutes. Practice maybe I used to do this way only. So 80-90 minutes में rest of the questions जो मुझे doubt है, but questions I have already read. तो फिर अब उनको सोचने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, जो सोचना था वो easily हो जाता है. And mainly होता है कि हम anxiety और panic में easy questions को गलत कर देते हैं. So certain questions like अभी इस बारी acid base वाले questions बहुत ज्यादा 3-4 आ गए थे. तो फिर उनमें ना मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज सिली मिस्टेक होती है वो, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं एंड वो गलती में गलत मार्क हो जाते हैं. सो सच क्वेश्चंस जो है कि गलत हो सकता है, मैंने उसको फर्स्ट को में छोड़ दिया कि ये नहीं करना है. Okay. Yes, sir. So that's a very important strategy that you said कि मतलब जहाँ पे आपको लग रहा था थोड़ा भी डाउट है उसको पहले छोड़ दिया and then with a calm mind you approach that again because time तो available था ही हाँ. नहीं. Okay. ये सो वो उसी चीज की ना प्रैक्टिस करनी होती है कि हाँ मुझे पता है आई विल कम फॉर अनदर राउंड. Okay. ऐसा नहीं ना कि वी स्लोली छोड़ दिया. शुरू में स्पीड स्लो, हाँ फिर वो कभी नहीं आए, वो नहीं. तो आई हैड दैट प्रैक्टिस कि मेरे को आई यूज्ड टू गेट 80 मिनट्स अराउंड, तो आई यूज्ड टू कम बैक. तो वो प्रैक्टिस से हो गया था. ग्रेट ग्रेट. सो मतलब ये जो सीरियस प्रिपरेशन है वो मतलब पढ़ते तो हम शुरू से ही रहते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना पड़ता है हमें. जो सीरियस प्रिपरेशन थी कि मतलब अब करना ही है कुछ भी हो जाए, तो वो व्हाट वाज द टाइमलाइन, मतलब वो सीरियस प्रिपरेशन आपका कब स्टार्ट हुआ? So serious wala last year March my internship ended, and after that, after coming back home, like during internship I had told my parents कि अभी इतना काम ऐसे नहीं हो सकता है. I need, like, I have to be focused and I need that kind of time. They were also very supportive. They told you take your time and whatever you feel is right, you do that way. So after March, just before COVID entered, I got back home around 16th March. That is when I honestly started my preparation. ओके ग्रेट. सो मतलब अगर हम देखें तो कुछ ऐसा था कि आपने डे में, लाइक लेट्स टॉक अबाउट योर डे. आज से 11 सितंबर को एग्जाम था, तो 3 महीने पहले हम रिवाइंड कर लेते हैं, तो उसमें एक डे में आप कितने घंटे पढ़ते थे? एंड लाइक कुछ एलोकेशन था कि भाई थ्योरी इतने पढ़ने हैं या एमसीक्यूज इतने घंटे पढ़ने हैं? वाज देयर एनी एलोकेशन या यू वर गोइंग विद द फ्लो कि मतलब टॉपिक एमसीक्यू? What was how were you going ahead with that? Sir, if I tell, अगर मैं लास्ट ईयर मार्च से रिवाइंड कर दूं, Okay. तो फिर उसमें पहले क्लियरली सब्जेक्ट वाइज आई स्टडीड, वीडियोस देखा 60% टाइम. अगर इनिशियल पार्ट वेरी इनिशियली जब हम कर रहे हैं 60% वीडियोस देखा, 40% क्वेश्चंस करे, बिकॉज वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना दैट कम्स अ लिटिल, थोड़ा प्रैक्टिस से होता है एंड उसको थोड़ा टाइम लगता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने में टाइम लगता है. तो तब से ही आई हैड स्टार्टेड. And because this journey was like little ups and downs बहुत थे, because exam postpone हो रहा था and कुछ समझ नहीं आता. तो I had finished my syllabus last year only. तो उसके बाद because वो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा था ना, तो I had actually tried various ways to keep myself interested in the topic और ये, because otherwise monotony set हो जाती है, आने लग जाती है. तो फिर तो तब during when I started revising, I used to read my notes, I used to solve some questions और ऐसे MCQs कर लिए. But I had a phase where in my revision I only practiced MCQs because exam उस time पे sure नहीं था कब हो रहा है. So I did that way as well. Later on, if you asked about 3 months पहले कैसे revise किया, तो 3 months उस time पे I am little, I get bored with reading notes. I have this thing. So what I did was I used to watch revision videos, क्योंकि syllabus actual videos देखे time हो गया है. तो रिवीजन वीडियो से ना वो सब सारा रिफ्रेश हो जाता है माइंड में, और टीचर्स के वर्ड्स वापस कान में आने लग जाते हैं. इन दैट वे उसके बाद फिर आई यूज्ड टू रीड माय नोट्स, तो इंटरेस्ट आ जाता था, बिकॉज आई रिसेंटली हर्ड, और रिवीजन वीडियोस हैंडी होती हैं इस केस में, कि रिसेंटली अभी सुना है, सो यू कैन इजीली गो थ्रू योर नोट्स एंड रीड दोस. So that's how I used to do. And talking about MCQs, I had actually solved MCQs every day. Some 100, 200 I used to do. And 200? abhi end Okay.
हाँ, तो वाओ, लास्ट ईयर से तो कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। नहीं नहीं, यू एक आपने मतलब बहुत अच्छी चीज बोली, मतलब जो प्रिसीजन एंड स्पीड वाली जो बात है ना, वो आपने आई थिंक वो स्किल बहुत फास्ट आपने मतलब वो जो प्रिसीजन एंड स्पीड दोनों ही आपने डेवलप किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई थिंक दैट वाज द मेन जो मेरा असेसमेंट है, दैट इज कि वो स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो क्वेश्चन पे सही मार्क करना, वो आपने काफी मेहनत करके वो डेवलप कर लिया, तो दैट इज व्हाई यू वर एबल टू डू यस, थिंग्स हाँ फास्टर। वो प्रैक्टिस से आया। एंड जो लास्ट फेज था ना, एट दैट टाइम क्योंकि मेनली तो रिवाइज करना था नोट्स, तब भी आई थॉट ऑफ डूइंग कस्टम मॉड्यूल्स। सो आई डिड 4 to 5 custom modules in a day, 50 क्वेश्चन वाली वो करती थी। एंड एक्चुअली नीट वाज इन अप्रैल which हाँ जी, got हाँ जी, postponed, राइट and तब QBank 3.0 लॉन्च हो रहा था। ओके। So I was actually excited about it, but exam हो जाना था, तो I thought I would never be able to do that. But that exam postpone हो गया, so I got excited कि अब मैं ये भी कर सकती हूँ। ओके So I did तो उनको करने के लिए, because subject wise करना was not possible later on. तो फिर with the help of custom modules I solved those clinical questions, and these things actually they exact question नहीं आता, but these things develop our understanding related to topics, तो वो in the long run helps us. And if we talk about the main exam, वो यही है कि आपने, if I'm talking about my journey last 1 year, questions solve कर करके क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो वो एक्सप्लेनेशंस पढ़ के, टीचर्स को सुन के उससे आती है। तो इन दैट वे इट यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। ओके ग्रेट। सो एनी फेवरेट फीचर ऑफ द ऐप, प्रेपलैडर ऐप जैसे आप यूज कर रहे थे, तो उसमें मतलब आप रेगुलरली क्वेश्चंस करते थे, तो कोई ऐसा फीचर जो मतलब आपको यूजफुल लगा? सर क्लिनिकल एसेंशियल्स अच्छा लगा था मुझे, ओके बिकॉज आई वाज एट होम और कोई हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ठीक है तो ओके। फिर पूरा दिन पढ़ के अगर बीच में, बिकॉज दे आर 6 minutes 12 minutes वीडियोस, जी तो जी। उसको देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि व्हाट आई एम एक्चुअली एमिंग फॉर, एम फॉल। क्या करना है लाइफ में, क्योंकि अभी तो सिर्फ पढ़ाई हो रही है ना। तो हम्म। उससे थोड़ा चेंज हो जाता था रूटीन में, और वो दिखता था कि मन करता था हाँ पढ़ना है अच्छे से, because this ओके। is where I want to be, this is what I want to do. And also those clinical simulation which is there, जो recently आया था, हाँ जी, हाँ जी। उस वो अच्छा था। उसमें I couldn't do more, टाइम नहीं मिला इतना, but राइट when I राइट। used to do थोड़ा सा क्या था, but उसमें ना after you are done तुमने कर दिया सब, तो हम्म। they the app उसमें पूरा टॉपिक आ जाता है, रिवाइज हो जाता है। वो पूरा तो टॉपिक that रिवाइज thing, होता है। हाँ वो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है, आपका मन कर हम्म। रहा है तो आप पूरा टॉपिक उस टाइम रीड कर लो, वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एग्जैक्टली, तो उसमें हाई यील्ड वो पॉइंट्स भी, रहते हैं। हाँ, और तुम थोड़ा क्लिनिकली सोच रहे हो कि पेशेंट का क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन कौन सी देनी है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। इट इज इतनी लंबी जर्नी में ना, इट वाज दिस years journey, it was more about how to keep yourself interested in doing these things, एग्जैक्टली। because normally 8 to 9 months मिलते हैं, बट अभी तो बहुत ज्यादा ही हो गया था। तो राइट। फिर इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है कि मन करे कि हाँ मेरे को पढ़ना है, दैट इज व्हाट डिफरेंट वेज ओके। आई ट्राइड कि इंटरेस्ट रहे। नहीं नहीं, गुड गुड, यू मेड इट साउंड वेरी सिंपल, बट आई कैन अंडरस्टैंड उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है कि खुद को कैसे मोटिवेट करके रखें, रोज जब सुबह उठे तो अपने आप को चीयरफुल करके यू हैव टू स्टडी। तो वो दैट दो यू मेड इट साउंड वेरी सिंपल, बट आई कैन रियली अंडरस्टैंड आपकी डेडिकेशन। एवरी डे यू वेक अप, तो हम डॉक्टर्स पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, तो वैसे आप अनवाइंड करते थे, मतलब आई अंडरस्टैंड यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड यू कुड चार्ज योर सेल्फ सुबह उठ के कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है। बट देन हो ही जाता है आफ्टर स्टडिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ आवर्स, एक यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू से कि भाई अब नहीं पढ़ सकते, या कई ऑफ डेज होते हैं कि भाई यू डोंट फील लाइक स्टडिंग। तो फिर अगर अगर मतलब ऐसी सैचुरेशन अचीव होती थी, पहला तो है कि अचीव होती थी कि नहीं सैचुरेशन आपकी, सेकंड कि अगर सैचुरेशन ऑब्टेन हो गई तो फिर आप अनवाइंड कैसे करते थे? सो जनरली तो व्हेन आई स्टडी तो आई टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स कि इतना प्रेशर नहीं आता था। ठीक है। एंड अगर कभी कभी होता था, तो आई यूज्ड टू वॉच समथिंग, एंड वो वैसे भी ऑल दिस टाइम आई हैड दैट कि कभी कभी
in a day, half an hour, 1 hour, I'm watching something on Okay. Netflix or Okay. Amazon. So उसपे में I was interested enough कि ठीक है करना है. Otherwise, I used to go and speak to my parents and entertain them. Okay. 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 No, that's अगर हम that's also a very good strategy कि आप रोज ही थोड़ा अनवाइंड कर लो कि वो प्रेशर बनने ही मत दो, right? I think that's a much more हाँ, proactive वो approach. sufficient amount of breaks, because anyways I cannot I'm not someone who can exert कि 4 दिन अच्छे से पढ़ लो 5वें दिन break ले लो. I'm not like that. I take break every few hours. I'm taking a break. I will roam around home, but I was not active on social media anywhere at all. Okay. So I was not using. I had decided that once I do this, फिर तो वो कहाँ जा रहा है, यही है. So just clear this exam is main. So I had that kind of control that I did not use it at all. I was watching a video. I even had a medicine doubt. I emailed you my doubt. I don't know if you remember or not. Yeah. But I emailed you my doubt. Good. देख और कोई तरीका नहीं था मेरे को Right. मेरे पास. Absolutely. तो doc, इसमें मुझे कोई let's put a figure to this. How many hours per day were you able to crunch? मतलब अगर मैं बोलूँ तो मतलब कोई आई अंडरस्टैंड मतलब कोई लिमिट नहीं रखते थे या आई अंडरस्टैंड कि मतलब इट यूज्ड टू वेरी, लेकिन कोई एक एवरेज फिगर मतलब एक फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कि भाई इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब लोग हमेशा ये बोलते हैं कि सर कर तो लेंगे बट कितना टाइम लगेगा. तो आपका असेसमेंट क्या रहेगा? एंड अ बिग शाउट आउट टू योर जूनियर्स ऑल्सो, क्योंकि वो आपको सीधा फोन करके मतलब आपका फोन नॉन स्टॉप बज रहा होगा, आप इनपुट्स दीजिए, एडवाइस दीजिए, अब कैसे करें, है ना? जूनियर्स तो मतलब दे वुड बी बजिंग यू ऑल द टाइम कि भाई अब मुझे आंसर चाहिए, है ना? तो मतलब उसमें आपका क्या एडवाइस रहेगा? Sir, I would say कि 8 to 10 hours a day is needed to, and actually consistently doing that is important. कि कभी कभी करो कभी नहीं करो ऐसे नहीं हो सकता. Doing that regularly, and if you invest 1 year of your life, I believe, because I did not prepare it from the very beginning, first year onwards. So if you invest 1 year, that is more than enough to crack it and do it with a good rank, decent rank. That was a very honest statement, no? After getting into top 100 of NEET PG, you're saying that you did not prepare from the first year and you prepared in the end. But it is good. It is good that this was a very honest views from your side. So any dedications in the end? Dedication. So I would actually want to thank you and Sparsh Gupta sir also, because by the end of the day, if I am like I don't feel like, and सोने से पहले I used to watch your live sessions on YouTube, Dr. Marwah live पे. So वो उससे थोड़ा refresh हो जाता था, and those are clinical integrated kind of questions, and they were not specific to medicine. वो कोई भी question होते थे, उससे interest बना रहता था. And then before exam also, Sparsh Gupta sir's that snapshot video, snapshot discussion on the app. I had watched it once before, so जब मैंने देखा था, I knew कि main exam से पहले I have to do this, because in that 6 hours जो 2x पे देखो तो 3 hours में हो जाता है. तो that was really effective, और उससे ना पूरा पैथो हो गया था, because जो सर ने images बताई, along with that he was speaking the content. तो that has helped me end moment पे वो 3 hours में वो पूरा पैथो रिवाइज करने में. And my cardiology was really weak. Then I referred to your videos and I got a clear idea later on how is it and how's everything. So that thanks to you as well. Sure. I really appreciate your very honest and very I would say मतलब खुद के ऊपर बड़ा ब्रूचुअल सा आपने वो करके कि मैंने सब कुछ कैजुअली किया, बट आई कैन अंडरस्टैंड द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट एंड द जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, मतलब वो सारी की सारी चीजें मतलब दैट दे आर डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड, एंड नाउ आपका जो स्माइल है वो विनर वाला स्माइल है और रिलीफ वाला स्माइल है. वो कॉम्बिनेशन परसेंटेज अलग अलग है कि भाई रिलीफ ज्यादा है या विनर वाला कंपोनेंट ज्यादा है, बट आई रियली वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस. Regards to your parents. Thank you, sir. And my blessings to you, and you would do great in your future career. Thank you so much, sir. Really, thank you.